1 thaw, verb. सुन होना, पिघलना, गलना. Of ice, snow, or another frozen substance, such as food, become liquid or soft as a result of warming up. 2 rapprochement, noun. मुफाहमत, मुसालहत. Especially in international affairs, an establishment or resumption of harmonious relations. 3 bitter, adjective. कड़वा, तल्ख. Having a sharp, pungent taste or smell, not sweet. 4 assertion, noun. हतमी मुवक्कत, इकरार वासिक, दावा. A confident and forceful statement of fact or belief. 5 sovereignty, noun. इक़्तिदार, हुकूमत, राज. Supreme power or authority. 6 fierce, adjective. संगदिली, खतरनाक, वहशी. Having or displaying an intense or ferocious aggressiveness. 7 intensification, noun. सख्ती, शिद्दत, बढ़ाना, तेज करना. The action of making or becoming more intense. 8 conflagration, noun. बेकाबू आग, आतिशज़दगी. An extensive fire which destroys a great deal of land or property. 9 ransack, verb. लूटना, छीनना, लूट लेना. Go through a place, stealing things and causing damage. 10 ally, noun. इत्तेहादी, ताल्लुक बनाना, दोस्त. Combine or unite a resource or commodity with another for mutual benefit. 11 frosty, adjective. ठंडा, सख्त सर्द, यख. Of the weather, very cold, with frost forming on surfaces. 12 reconciliation, noun. मुसालहत, सुलह, मुतनासिब ताल्लुकात. The restoration of friendly relations. 13 clout, noun. साफी, मुक्का, असर, पेबंद. A heavy blow with the hand or a hard object. 14 hardened, adjective. सख्त क्या हुआ, बेहिस. Very experienced in a particular job or activity and therefore not easily upset by its more unpleasant aspects. 15 stance, noun. मौक़िफ़, हालत, कैफियत, नुक्ता नज़र. The way in which someone stands, especially when deliberately adopted, as in cricket, golf, and other sports, a person's posture. 16 ambition, noun. तमन्ना, आज़ू, हवस. A strong desire to do or achieve something. 17 proactive, adjective. फ़ाल, पेश कदमी के ज़रिए सूरत हाल पर काबू पाने वाला. Of a person or action, creating or controlling a situation rather than just responding to it after it has happened. The unexpected thaw between Saudi Arabia and Iran is a major diplomatic triumph for China. In a rapprochement mediated by Beijing, the two arch-rivals, which had been engaged in a bitter proxy war in the Middle East for the past several years, have agreed to re-establish diplomatic relations and ease tensions. The agreement demonstrates the growing assertion of China's clout in one of the world's most volatile regions. It also highlights the changing global order, with China playing a bigger role on the world stage. The détente comes at a time of increasing rivalry between the two superpowers America and China, which threatens to push the world towards a new Cold War. Many analysts describe the agreement signed by the two sides in Beijing last week as an indication of waning U.S. influence in the region. The deal may not bring an end to the deep-rooted rivalry between the two regional powers, but it can certainly end discord and open the way for a peaceful resolution of conflicts in the region. The two countries have agreed to re-establish diplomatic ties and reopen their respective missions within 2 months. The agreement also affirmed the respect for the sovereignty of states and the non-interference in internal affairs of states. Significantly, the trilateral statement released in Beijing last week has also mentioned the 2001 Security Agreement and the broader 1998 Cooperation Agreement between Saudi Arabia and Iran.
Tehran and Riyadh have been locked in a fierce battle for supremacy in the Middle East region for decades. The two have been fighting proxy wars in Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen. But the intensification of the civil war in Yemen turned into a flashpoint over the last few years, threatening a wider regional conflagration. The Saudi-Iran détente comes at a time of increasing rivalry between America and China. While Saudi Arabia has supported Yemen's government forces, the Houthi rebels have been backed by Iran. The Yemeni civil war spilled over into Saudi Arabia, with rebel forces targeting oil facilities inside the kingdom. The two countries severed diplomatic ties in 2016 after Saudi Arabia executed a prominent Shia cleric, leading a mob in Iran to ransack the Saudi embassy there in protest. That also ended cooperation between the two countries in various fields. Iran's nuclear program has also been a major Saudi security concern, intensifying the rivalry between the two Gulf countries. Their anti-Iran positions had also brought Saudi Arabia and Israel closer. Not surprisingly, both welcomed the decision of the Trump administration to withdraw from the Iranian nuclear deal. Over the past few years, Riyadh has been sending out signals that it was ready for greater cooperation with Israel. The kingdom tacitly supported the recognition of Israel by the UAE and some other Gulf countries. But the fear of a backlash from extremist elements stopped Riyadh from openly establishing official relations with Tel Aviv. Saudi Arabia has long been America's staunchest Middle East ally. Though the kingdom has remained dependent on Washington for its security, ties between the two cooled under the Biden administration. The frosty reception given to President Joe Biden during his visit to Riyadh last year was a clear message from the de facto Saudi ruler Crown Prince Mohammed bin Salman that it would not be business as usual. This was in part a reaction to strong criticism by President Biden regarding the alleged role of the Crown Prince in the murder of Saudi journalist and U.S. resident Jamal Khashoggi. In contrast, President Xi Jinping of China was accorded a red carpet welcome when he visited Riyadh last December. The growing Beijing-Riyadh ties are also dictated by bilateral economic interests. China is Saudi Arabia's largest trading partner, with the kingdom being a major supplier of oil to the former. Riyadh's move towards reconciliation with Iran is also driven by the Crown Prince's Vision 2030 that envisages the diversification of the kingdom's oil-dependent economy by attracting foreign investments. It also calls for cultural openness of the conservative society. Meanwhile, there has been a strengthening of bilateral relations between Beijing and Tehran in the past years, with the tightening of U.S. sanctions against the Islamic Republic. China considers Iran strategically important in the changing politics of the region. In 2021, China signed an agreement for an investment of more than $40 billion in infrastructure development in exchange for oil. The Iranian president was given a rousing reception when he visited Beijing earlier this year. These developments gave China huge diplomatic clout, and it played a mediating role between the two bitter rivals. Last week's agreement was reached after days of secret parleys between Saudi and Iranian officials, facilitated by Beijing. The landmark deal reflects the shifting sands of regional geopolitics. It is also a personal triumph for Chinese President Xi. The dramatic diplomatic breakthrough came as he was elected for his third term. Being president, party leader, and chairman of the Chinese military makes President Xi the most powerful leader in China's recent history. It gives him absolute power to determine the future course of the country. Under him, there has been significant projection of Chinese power. Internationally, China is now playing a more proactive role. Washington's move to contain China has further hardened Beijing's stance. Relations between the U.S. and China have worsened in recent times. China is now not only challenging U.S. economic leadership far more intensely than before, but is also asserting itself more forcefully on the global stage. Its growing economic and political power is seen as a threat to American domination. President Xi's ambition of propelling China to center stage of the global power game represents a sharp departure from the approach of previous Chinese leaders who strictly adhered to the policy of not taking the lead in global conflicts.
focusing its energies on development helped the country become an economic superpower. But now, China is also taking a lead in global affairs. The latest deal between Saudi Arabia and Iran indicates China's growing assertiveness on the global stage. Beijing's increasingly proactive role is likely to alter the existing world order. The writer is an author and journalist. Published in Dawn, March 15, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. सऊदी अरब और ईरान के दरमियान गैर मुतवक्के सर्द महरी चीन के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। बीजिंग की सालसी में होने वाली मुफाहमत में दोनों हरीफ, जो गुज़िश्ता कई सालों से मशरिक़ वस्ता में एक तल्ख़ प्रॉक्सी जंग में मसरूफ़ थे, ने सिफारती ताल्लुकात को दोबारा कायम करने और तनाव को कम करने पर इत्तेफाक किया है। ये मुआहदा दुनिया के सबसे ज़्यादा गैर मुस्तहकम ख़तों में से एक में चीन के असर और रसूख़ के बढ़ते हुए दावे को ज़ाहिर करता है। ये बदलते हुए आलमी निज़ाम पर भी रोशनी डालता है, जिसमें चीन आलमी सतह पर एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दो सुपर पावर्स अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनी है, जिससे दुनिया को एक नई सर्द जंग की तरफ धकेलने का खतरा है। बहुत से तज्ज़ियाकार गुज़िश्ता हफ्ते बीजिंग में दोनों फ़रीक़ों की जानिब से दस्तखत किए गए मुआहदे को ख़ित्ते में अमरीकी असर और रसूख़ में कमी का इशारा करार दे रहे हैं। हो सकता है कि यह मुआहदा दोनों इलाकाई ताकतों के दरमियान गहरी दुश्मनी को ख़त्म न करे, लेकिन ये इख्तिलाफ़ात को ज़रूर ख़त्म कर सकता है और ख़ित्ते में तनाज़ात के पुरअमन हल की राह खोल सकता है। दोनों ममालिक ने सिफारती ताल्लुकात को दोबारा कायम करने और 2 माह के अंदर अपने मुताल्लिका मिशनों को दोबारा खोलने पर इत्तेफाक किया है। मुआहदे में रियासतों की खुद मुख्तारी के एहतराम और रियासतों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का भी इआदा किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते बीजिंग में जारी होने वाले से फ़रीक़ी बयान में 2001 के सिक्योरिटी मुआहदे और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान 1998 के वसीतर ताउन के मुआहदे का भी जिक्र किया गया है। तेहरान और रियाज के दरमियान कई दहाइयों से मशरिक़ वस्ता के ख़ित्ते में बालादस्ती के लिए शदीद लड़ाई जारी है। ये दोनों ममालिक इराक़, शाम, लबनान और यमन में प्रॉक्सी जंगें लड़ रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान यमन में खाना जंगी की शिद्दत एक फ्लैश पॉइंट में तब्दील हो गई है, जिससे वसीतर इलाकाई कशीदगी का खतरा पैदा हो गया है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी एक ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका और चीन के दरमियान दुश्मनी में इजाफा हो रहा है। जहां सऊदी अरब ने यमन की सरकारी अफवाज की हिमायत की है, वहीं हौसी बागियों को ईरान की हिमायत हासिल है। यमन की खाना जंगी सऊदी अरब तक फैल गई और बागी अफवाज ने ममलुकत के अंदर तेल की तनसीबात को निशाना बनाया। दोनों ममालिक ने 2016 में इस वक्त सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए थे, जब सऊदी अरब ने एक मुमताज़ शिया आलम को फांसी दे दी थी, जिसके बाद ईरान में मुश्तइल हुजूम ने एहतिजाजन सऊदी सिफारत खाने में तोड़ फोड़ की थी। इससे दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शुबों में ताउन भी ख़त्म हो गया। ईरान का जौहरी प्रोग्राम भी सऊदी अरब की सलामती के लिए एक बड़ा मसला रहा है, जिसकी वजह से दोनों खलीजी ममालिक के दरमियान दुश्मनी में शिद्दत आई है। इनके ईरान मुखालिफ मौक़िफ़ ने सऊदी अरब और इसराइल को भी करीब लाया था। हैरत की बात नहीं कि दोनों ने ट्रंप इंतज़ामिया के ईरानी जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के फ़ैसले का खैर मुक़द्दम किया। गुज़िश्ता चंद बरसों से रियाज़ ये इशारा दे रहा है कि वो इसराइल के साथ वसीतर ताउन के लिए तैयार है। ममलकत ने मुत्तहिदा अरब अमारात और कुछ दीगर खलीजी ममालिक की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने की खामोश हिमायत की, लेकिन इंतहा पसंद अनासिर के रद्द अमल के खौफ ने रियाज को तुल अबीब के साथ खुले आम सरकारी ताल्लुकात कायम करने से रोक दिया। सऊदी अरब तवील अरसे से मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी रहा है। अगरचे सऊदी अरब अपनी सलामती के लिए वाशिंगटन पर मुनहसर रहा है, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया के दौर में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार हो गए थे।
गुज़िश्ता बरस सदर जो बाइडन के दौरा रियाज के दौरान उनका जो शानदार इस्तकबाल सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वाज़े पैगाम था कि मामूल के मुताबिक कारोबार नहीं होगा। सऊदी सहाफ़ी और अमरीकी शहरी जमाल खाशिक़जी के कत्ल में वली अहद के मुबैना किरदार के हवाले से सदर बाइडन की जानिब से की जाने वाली सख्त तनक़ीद का यह रद्द-ए-अमल था। इसके बरक्स चीन के सदर शी जिनपिंग ने गुज़िश्ता दिसंबर में रियाज का दौरा किया तो उनका रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया। बीजिंग और रियाज के बढ़ते हुए ताल्लुकात भी दो तरफ़ा इक़्तिसादी मफादात पर मुनहसर है। चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और सऊदी अरब को तेल फराहम करने वाला एक बड़ा मुल्क है। ईरान के साथ मुसालहत की जानिब रियाज का कदम वली अहद के विजन 2030 की वजह से भी है, जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करके ममलुकत की तेल पर मुनहसर मईशत को मुतनव्वे बनाने का तसव्वुर किया गया है। यह क़दामत पसंद मुआशरे के सकाफ़ती खुलेपन का भी मुतालबा करता है। दरियासना गुज़िश्ता बरसों में बीजिंग और तेहरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत हुए हैं, जिसमें इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों को सख्त किया गया है। चीन खित्ते की बदलती हुई सियासत में ईरान को स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम समझता है। 2021 में चीन ने तेल के बदले बुनियादी ढांचे की तरक्की में $40 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ईरानी सदर ने रवां साल के अवाइल में बीजिंग का दौरा किया था तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। इन पेशरफ्तों ने चीन को बहुत बड़ा सिफारती असर और रसूख दिया और उसने दो तल्ख खरीफों के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाला मुआहिदा सऊदी और ईरानी हुक्काम के दरमियान कई दिनों की खुफिया बातचीत के बाद तय पाया था, जिसमें बीजिंग की मदद हासिल थी। यह तारीखी मुआहिदा इलाकाई जुग़राफियाई सियासत की बदलती हुई रेत की अक्कासी करता है। ये चीनी सदर शी जिनपिंग की ज़ाती फतह भी है। यह ड्रामाई सिफारती पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब वो अपनी तीसरी मुद्दत के लिए मुंतखब हुए। सदर, पार्टी लीडर और चीनी फौज के चेयरमैन की हैसियत से सदर शी जिनपिंग चीन की हालिया तारीख के सबसे ताकतवर रहनुमा बन गए हैं। ये उन्हें मुल्क के मुस्तकबिल के लाइहा अमल का तयन करने का मुकम्मल इख्तियार देता है। उनके दौर में चीनी ताकत का नुमायां अंदाज़ा लगाया गया है। बैन अल-अक़वामी सतह पर चीन अब ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। चीन पर काबू पाने के वाशिंगटन के इक़दाम ने बीजिंग के मौक़िफ़ को मज़ीद सख्त कर दिया है। अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात हालिया दिनों में ख़राब हुए हैं। चीन अब न सिर्फ अमरीकी माशी क़यादत को पहले से कहीं ज़्यादा शिद्दत से चैलेंज कर रहा है, बल्कि आलमी सतह पर भी खुद को ज़्यादा ज़ोर दे रहा है। इसकी बढ़ती हुई माशी और सियासी ताकत को अमरीकी तसल्लुत के लिए खतरे के तौर पर देखा जाता है। चीन को आलमी ताकत के खेल के मरकज़ में लाने के सदर शी जिनपिंग के अज़ाइम माजी के चीनी रहनुमाओं के नुक्ता नज़र से वाज़े इन्हिराफ की अक्कासी करते हैं, जो आलमी तनाज़ात में क़यादत न करने की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा थे। तरक्की पर अपनी तवानाइयाँ मरकूज़ करने से मुल्क को माशी सुपर पावर बनने में मदद मिली, लेकिन अब चीन आलमी मामलात में भी कायदाना किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताज़ा तरीन मुआहिदा आलमी सतह पर चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख की निशानदेही करता है। बीजिंग के बढ़ते हुए फ़ाल किरदार से मौजूदा आलमी निज़ाम को तब्दील करने का इम्कान है। मज़मून निगार मुसन्निफ़ और सहाफ़ी हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 15 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.